कुछ नहीं, बस थोड़ा क्या देख रहा क्या है तू? बोर हो रहा था तो यूट्यूब वही अपना रोज का जैसा कुछ भी ऑब्वियसली कुछ हाँ। मिला तो वही उसमें क्या देख सही। रहा था? बस वो एक वीडियो है, ये बंदा है, हिज नेम इज हरीत शेख हम्म। एंड ही स्टेज इन पुणे एंड इट्स लाइक स्टॉक कर रहा है क्या? नहीं ब्रो, उसके पास अराउंड 3000 कैमरास है। 3,000? यस, लाइक फ्रॉम द विंटेज से लेके अभी तक जितने कैमरास, लाइक जो लाइक आई गेस 50 years पहले जितने कैमरास थे हाँ। तब से लेके अब तक जितना भी कलेक्शन बनाया है उसने पूरा। डैम। He owned a photography studio and उसके बाद he started collecting all of the Nice. cameras and like Okay, before we start talking all about cameras, let's welcome the people in, right? yes. Okay. Welcome back, ladies and gentlemen of the internet. This is Beyond Pixels podcast. My name is Anirudh, and with me is Vinayak. And today we are going to talk about gear, my favorite subject, and somewhat Vinayak's. Vinayak sir, सबसे पहला कैमरा कौन सा था? मेरा सबसे पहला कैमरा, मुझे फुल नेम तो पता नहीं उसका, मतलब मेरे को भी नहीं पता, मेरे पास भी सेम है। इट्स नेम इज लाइक याशिका डी समथिंग 360 300 ऐसा समथिंग कुछ नाम था एंड इट वाज माय फर्स्ट फिल्म कैमरा and it was literally amazing, you know. Was it manual? No, it was not manual. Uh-huh. It was like regular camera. Like उसके लिए settings भी उसमें कुछ था नहीं ऐसा, like जैसा प्रोग्राम मोड होता है अभी के DSLRs में, पता है वो भी नहीं था। मेरे पास भी याशिका का एक फिल्म कैमरा था, मेरे पास भी सेम था। ओके, द ओनली थिंग मैनुअल अबाउट दैट वाज उसमें जो हम लोग ने शॉट खींचते थे ना, उसके बाद रोल को हम मैन्युअली करते थे, करके साउंड आता था। वो ऊपर एक डायल रहता है जिससे उसमें रोल को ये करना लिखे पड़ता होते है। हैं। हाँ, उसमें नेक्स्ट फिल्म पे जाते हैं। लेकिन मेरे इसमें आई हैड टू क्रैंक इट मैन्युअली तो अगले फिल्म के लिए, एंड देन जब मेरा रोल खत्म हो गया तो लेफ्ट साइड में एक हैंड क्रैंक था जिसको निकाल के आई हैड टू क्रैंक द एंटायर रोल बैकवर्ड्स। यू नो द थिंग इज कि सबसे ज्यादा ये इवेंट्स के टाइम में यूज होता था कैमरा, मोस्टली लाइक बर्थडे पार्टीज, मेरे पास घर पे कुछ लाइक प्रोग्राम वगैरह हुआ, मेहमान आए, या फिर अगर किधर गए बाहर लाइक घूमने वूमने तो हम ले एंड गए उस थे टाइम पे मस्त। बहुत क्लोज रखते थे उस कैमरा को हम, यू नो। इट वाज अ फीलिंग दैट टाइम कि अरे इसमें फोटो क्लिक किया, खो गया तो क्या होगा फिर। अरे मेरे घर पे उल्टा था, मेरे घर पे कैमरा कहाँ रखा है बोलते थे नहीं मेरे को, क्योंकि उनको पता है मैं कीड़ेदार हूँ, तो मैं रोल निकाल के खराब कर दूंगा। बट दैट टाइम मुझे वो रियलाइजेशन नहीं था कि मैं इतना मुझे इतना प्यार हो जाएगा फोटोग्राफी से। उस टाइम पे मुझे था भी नहीं आइडिया कि क्या होता है एग्जैक्टली फोटोग्राफी। आज जब मैं फोटोग्राफी के बारे में समझ चुका हूँ सब कुछ, लाइक क्या मैनुअल मोड कैसे यूज करते हैं, वाइट बैलेंस एंड ऑल ऑफ दोस स्टफ ब्ला ब्ला, व्हाट आई थिंक नाउ कि उस टाइम पे जो लोग थे दे डिडंट इवन गेट अ सेकंड चांस कि अरे इसमें थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ा एक्सपोजर शिफ्ट करके थोड़ा वापस लेता हूँ इसका शॉट को। हाँ एग्जैक्टली। आई इमेजिन दिस थिंग कि वो उस टाइम पे वो लोग वो वन शॉट लेते थे एंड दैट यूज्ड टू बी दैट वन क्लियर शॉट, दैट्स इट। लिया, मिस कर दिया। I mean, You can't take it again. obviously there were missed shots, but to think about that, professional लोग, they had only one chance to take that shot. Nowadays we have cameras like Nowadays we 1DX call it Mark 3, yeah. Yes. Nowadays we call it like bucket shots बोलते हैं हम उसको typically. Basically. To take that one shot. Why people feel film is basically closer to photography than digital is. Some people do. क्योंकि the process is actually very physical. Yes. Light rays coming and engraving in the silver grains, and that is where the term grain comes from. Because in film, there are actually silver grains which absorb light and deform according to the light. And उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद वो फोटो एक्चुअली बनता है, नेगेटिव बनता है, उसको स्कैन करके फिर उन लोग ये करते हैं। सो दैट इज वेरी इन हैंड, अपन हाथ में पकड़ के कर सकते हैं। इट इज दैट फिजिकल, दैट वाज अ फिजिकल प्रोसेस। मैं बचपन में यही सोचता था कि अरे नेगेटिव है, नेगेटिव्स में आता है सब फोटोज, बट इट्स लाइक नेगेटिव वो सेपिया कलर्स होता है उसमें, हाँ वो फॉर्मेट में रहता है। आई यूज्ड टू थिंक अरे इसमें कलर्स तो दिख नहीं रहे, बट आफ्टर गेटिंग लाइक दैट इज नॉट सेपिया, दैट इज ग्रे स्केल। नेगेटिव मतलब उल्टा होता है। तो वही मैं सोचता था कि जो रेड रूम रहता है उनका, जिसमें वो लोग फोटोज डेवलप करते हैं,
उसमें वो केमिकल के अंदर डालने के बाद हाउ डज इट अपीयर? आई हैव नेवर सीन दैट प्रोसेस दो, बट आई वुड लव Even टू सी even इट if वन you डे. have a red room of yourself, you can never see. If you see, तेरा film खराब हो जाएगा. क्योंकि it is supposed to be in the dark. Yesterday I came across this camera 35 Mm-hmm. old vintage camera, and उसका price अभी it was around like $4,200 something. Yeah, even I came across it. It's not 35 नहीं, it's a full frame film camera from which the full frame digital format Yeah, I was bought didn't from. read it completely कि क्या है उस बारे में. I just saw a glance like कि देखा बस read करके छोड़ दिया मैंने. But it was like कि people are still using those film cameras still. It is not. It's making a comeback actually. More and more digital photographers are going towards the film feeling. We want to emulate the film feeling. Those grains and Exactly. So I was going through Twitter and there was this new trend about film and digital shots. People were putting, the same shot. This left side mein this was shot on film, right side mein it was shot on digital. Both of them looked very good. Okay, both of them had the same vibe, something like that. But something about film is very intriguing, and people are actually coming back to that shot. पहले कैसा होता था कि लोग they did not have a choice, they had to shoot on film. उसी एक ही जो है हाथ में उसी से. They had to shoot on film. Now they have a Okay. choice. Now they have a choice. So now people do professional shoots on digital format, and people buy film cameras and shoot for fun. You know what happens when people start shooting for fun, when there is no aspect of money, fame involved? You actually start enjoying photography. And you know what I think is कि आज के ज़माने में वो memories बनाना, it's the same. The importance is same. Memories का importance is same. See, the output is even same. हाँ. फोटो ही बनने वाला है दोनों तरीके से. But the thing is that the process of shooting film versus digital is what sets it apart. क्योंकि फिल्म में शूट करने के बाद you can't actually see it 2 सेकंड में. Yes, बिल्कुल नहीं. You have to wait for it एक हफ्ते डेवलप करने के लिए, उसके बाद ही दिखता है. I love that camera. You know उसका नाम क्या है वो Polaroid camera. हाँ. I love that camera. तभी का तभी क्लिक करो वो आ जाएगा फोटो, बट उसको फिर हवा में सुखा हुआ ऐसा. हाँ, exactly. मजा आता है वो, फिर उसमें मस्त एक मेमोरी आती है. I think Polaroid is one of the best innovations in the past decade. It takes the advantage of film and brings all of the disadvantages down. Of course, you don't get many options to choose. Like तेरे पास manual mode नहीं है उसमें. You can't set an aperture, you can't set an shutter speed, and you can't even use different lenses. Sometimes you will have to buy like focal length specific cameras if there are any. I saw this thing one day कि there is a जैसा अपना किट्स रहते हैं कि you can DIY किट्स रहते हैं, you can make it and then you can use it. Yeah. अभी ये एक टाइप का कैमरा है. there's a DIY kit that you get. उसमें एक बोर्ड रहता है, लिटरली एक कार्डबोर्ड रहता है ना, उतना पतला कैमरा. सिर्फ वो बोर्ड को you fold it, उतना पतला सा एक कैमरा रहता है, उसपे आगे लेंस रहता है, इतना पतला सा लेंस रहता है वो एक लिटरली. एंड उसमें you can even insert your SD card, micro SD cards, and you can click that photo. And just imagine कैमरा कितना बड़ा हुआ करता था एक टाइम पे. Cameras used to be the size of this room, by the way. The first ever cameras that were made, बड़ा वाला सा एकदम. हाँ एकदम. कैरम बोर्ड के साइज में उसका पीछे का बैक प्लेट था उसका. Damn, I used to imagine कि वो लोग ब्लैक कर्टन के अंदर जाके देखते थे एंड देन उसके बाद फोटो खींचते थे. एंड आई वाज लाइक आज तो व्यू फाइंडर है, उसमें से देखो. डिजिटल भी अवेलेबल है स्क्रीन पे, यू कैन जस्ट वॉच इट एंड शूट इट. दैट्स ऑल. अब विंटेज के बारे में तो बात कर लिया बस. हाउ मेनी कैमरास डू यू एक्चुअली हैव? If I count my mobile phones, then two cameras. And in whole lifetime? 3 actually, 3 in total. 2 of them were film cameras and 1 is digital right now. Okay, I guess I had 4 cameras. Like सबसे पहला फिल्म कैमरा याशिका का, then याशिका का डिजिटल वाला, then सोनी का डिजिटल, and then my this. I think the second one I had was a Kodak वाला film and it was fully automatic. Nice. उसमें फिल्म का रोल डाल दिया, बंद कर दिया, कैमरा ऑन कर दिया, ऑटोमेटिकली वो रोल करता था हर शॉट के बाद. एंड देन खत्म हो गया, रील खत्म हो गया, अपने आप बैक रोल वापस कर देता था. इट वाज fully mechanical, 100% mechanical, like my old one used to be. I saw this reel or I saw this shot somewhere where people were using like a 50-year-old camera and it is 100% mechanical.
Like you have to open the viewfinder, ऊपर से देख सकते थे. And then if you don't want that, you can swap it out for a pentaprism viewfinder like you have on your digital camera, and then you Oh can my shoot, God. place it on your head ऐसे. And then to focus that, there was another lens inside the viewfinder जो थोड़ा सा और magnify करता है. And उसको then भी शिफ्ट करो या कुछ करो. exactly film place करके, and then you have to set the shutter speed manually. मतलब you have to completely play with the camera to exactly. get the desired shot. Yeah. You know, this thing I saw Peter McKinnon का shorts, YouTube shorts में. हाँ. I saw this. There is this lens. पूरा lens जो है वो brass का बना हुआ है. And literally there is this dial हाँ. with which you have to shift your focus and all of those. I mean, like it's so manual. आजकल का तो plastic body रहता है. That is not manual. That is primitive. That was like one of the first lenses ever made. Did you know what the world's fastest lens is? Nope. So I was going through YouTube and I saw this video where they were using the world's fastest lens. It was a 50mm 0.7 lens, f0.7. It was made by Zeiss and it was made for NASA's Apollo program. क्योंकि they were going to go to the far side of the moon and वहाँ पे ज़्यादा light नहीं होता है. They did not have film that was very sensitive. उनके पास baseline, उनके पास सिर्फ 100 ISO वाला film था. ये exact same lens पता है स्टैनली क्यूब्रिक ने यूज़ किया था उसके एक फिल्म में. I don't know this guy. Really? Do you know the film 2001 Space Odyssey? नाम सुना है. नाम तो सुना ही होगा, इसने बनाया है वो. Yeah. Okay, So how many types of different cameras you know present में? I think used all types of cameras except the biggest cinema ones. So I have used point and shoot cameras. I have used DSLRs, mirrorless cameras. I've even used the Blackmagic pocket cinema camera. Nice. So that is like a hybrid between DSLR and a cinema camera. It is a cinema camera, but it looks and feels like a DSLR. हाँ, थोड़ा सा बड़ा रहता है ना. वैसे ही है अपना 5D है ना. हाँ, उससे थोड़ा सा 5D, बड़ा है yes. बस. उसका Exact. हाँ, उससे थोड़ा सा बड़ा है वो. So I guess I might have not used mirrorless cameras. So what do you think कि DSLR का era कहाँ जा रहा है? I think it is coming to an end, but not like you might think. You know, as we spoke, अभी film cameras भी वापस आ रहे हैं, लोग film भी use कर रहे हैं. जो लोग DSLRs पे shoot करते थे, I don't think they are going to ditch it just because something new has come out. 5D लोग जो shoot करते थे, just because EOS R came out, they did not stop using the 5D. They just, even if they bought the new cameras, because they still work, and because that's how pro cameras are meant to be. They are meant to work for multiple years, decades even. So another point to note in DSLR versus mirrorless fight is that there is one advantage that DSLR still have over mirrorless cameras: the optical viewfinder. Okay. Do you know why? No. क्योंकि अभी आप बोल रहे थे कि हम लोग 2-3 साल वेट कर रहे बकेट शॉट के लिए. सो when you are on the field and you have the shot but you are waiting for the timing, you can just simply switch off your DSLR and your optical viewfinder will still be open and you can still see the shot. ठीक है, and your battery viewfinder से दिखता है वो. Exactly. In a mirrorless camera that's not possible. Also in a mirrorless camera the viewfinder is usually like a much better screen than the screen itself. It has more megapixels in it. It's a much higher quality, clear view, much higher quality display. Exactly. So उसमें से क्या होता है, हम लोग व्यू फाइंडर से देखते हैं ना तो ज़्यादा बैटरी जाता है उसमें as compared to the screen. Oh, okay, I got it. It's just like a screen. It is a screen ना, display. It is a screen, but viewfinder में से जो view करते हैं वही चीज, same चीज. Exactly. So it is a much higher resolution display. The viewfinder is. ऐसा जब मैंने DSLR खरीदा था तो मैंने जब बैटरी लाइफ टाइम का पूछा था कि कितना टाइम लास्ट करेगा वंस चार्ज्ड कंप्लीटली, तो दे वर लाइक कि अगर स्क्रीन ज्यादा यूज किया, LCD यूज ज्यादा यूज किया तो थोड़ा बैटरी ड्रेन होएगा जल्दी. अगर इफ यू यूज व्यू फाइंडर नॉर्मली तो आराम से ड्रेन होगा. इट इज द ऑपोजिट इन मिररलेस ऑलमोस्ट. क्योंकि इफ यू सी मेरा वाला जो कैमरा इट इज लाइक 2 MP फॉर द स्क्रीन LCD and the viewfinder is 3.4 or something, so it consumes more battery. Like that. Speaking of batteries, how many do you have? I have 2. Nice. Yes. A quick tech tip: when you buy a camera, always buy extra batteries, regardless of what the battery life is, unless you have a 1DX Mark II, because that will last you the entire day. Okay, so talking about DSLR cameras, उस दिन मैं एक
branded mobile shop में गया था. Oh, okay. And I was just looking for the latest version of the phone that has came out, that has Of course. recently launched. जो सेल्स पर्सन है वहाँ पे, वो मुझे आके पूछा कि कौन सा फोन देखना है आपको. तो बोला वो जो लेटेस्ट आया एक नया, उसका कैमरा मस्त है ये वो. फिर वो बोला करके, अच्छा वो फोन डीएसएलआर कैमरा वाला. बोला, क्या? Cringe. Oh my god. बहुत ज्यादा क्रिंज. आई वाज लाइक literally people are right now comparing mobile phone का कैमरा with DSLRs. That is been happening for many years, but उसमें ये तो है. So what's your thought on this? क्या सोचता है तू इस बारे में? I think all mobile manufacturers use their camera as a marketing gimmick. They have let me be clear, they have improved. Okay, mobile phone cameras are very good now. Even on budget phones they are very good, but still it can't compare to an actual camera. But it comes to an end कि वो लोग सिर्फ एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं मोस्टली. मतलब अगर पिक्चर को क्लियर बनाना है, फॉर एग्जांपल अवर नाइटस्केप मोड, अभी उसका जो एपर्चर है वो इतना ओपन भी नहीं है कि उसको शॉट लेने को प्रॉब्लम होगा. बाय द वे ग्रेन्स आएंगे. एपर्चर वगैरह है ना फोन में, everything is software. There is nothing mechanical about this. It is a fixed aperture already. But there is this company called अपना Samsung. उसने That's a gimmick. Really? I'm telling you. मेरे को पता है तो क्या बोलने वाला है करके. हाँ, okay. I know it is that a different aperture वाला. हाँ, so for the guys if you don't know, Samsung ने like a year back एक फोन निकाला था जिसमें we can change the aperture to two modes. Only two modes. I don't remember कौन सा था, but do you remember? It's not worth buying. There are also new phones coming which have 100 megapixel cameras on the phone. I'm like, why do people care about megapixels this much? They are not going to do anything professional about it. And they call it infinity zoom. Like, why? See, that is the difference between actual photographers and regular people. Actual photographers को पता है उनको क्या चाहिए करके. Yes. And people who are trying to get into photography, if they fall for this marketing gimmicks, they are going to go in a very, very bad route. Yes, that's true. But you can still do very good shots with mobile. But there is an exception. Almost everything that you shoot on mobile is already processed. You don't get anything raw out of it. Yeah. You are not doing anything to it. Even if you told me one day कि एक फोन है जिसमें raw cameras करके है option, you can shoot raw, but at the end you don't get the exact raw format. Exactly. You are still getting a compressed, processed version of the photo. You are not getting the raw file. Yes. But if you have a doubt, just borrow your friend's camera or anybody's camera, shoot one photo in raw and shoot one photo from your mobile and import both of those photos into Lightroom and start playing with it. And you will see the difference. No, I have literally tried this thing. मेरा जो OnePlus 3T था उसमें मैंने raw photo लिया. I clicked a raw photo and एक मैंने DSLR से click किया. I edited both the images and they have a vast difference. I know, right? अच्छा एक बात बता. अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट कैमरास के बारे में. So what do you think कि सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा है आज के एरा में, which is a beast? I think इसके लिए एक आंसर नहीं है, इसके लिए यूज केस के हिसाब से है, बट स्टिल I like to shoot both videos and photos. So मेरे हिसाब से हाइब्रिड कैमरा मेरे लिए अच्छा रहेगा. I think Fujifilm का जो X-T4 है उनका मिररलेस कैमरा APS-C में टॉप एंड में है वो. It has both video and photo features. It can shoot 15 FPS burst, so it is good for wildlife, sports, etc. And it can also shoot 4K 60 DCI 4:2 internally, and it has 2 card slots. So दोनों में record कर सकता है. Okay. I think that is the end of the line right now. I think that is what the camera I will pick if I had infinite money. You know, there is this thing कि when I bought my Canon 80D, मैंने भी as you said कि hybrid कैमरा चाहिए जिसमें वीडियो भी अच्छा हो and photo quality भी अच्छा हो. So I went with that same. Even I did the same thing. Now what I feel is कि एक limited frames per second तक मेरा shoot होता है DSLR में. So now what I feel is कि मेरे पास limitations है कुछ कि like video में I can't go beyond 60 frames per second. And now I have started shooting product videos
and now I feel कि मुझे 120 frames per second का ज़रूरत है Hmm. because shooting that slow-mos, you know, Yeah. crispy Yeah, slow-mos. yeah, yeah. And I love slow-mos. I'm a fan of slow-mos completely. So it's like कि मुझे अब पता चल रहा है करके अरे इसमें थोड़ा limitations है मैं क्या करूँ. So I somehow I try to shoot it with my phone. Mm-hmm. मेरे फोन में स्लो मो है Oh, मोड. okay. So So how I did try that go? to उसमें है issues. So if you want to shoot in 480 frames per second, so the video output will be in 720p. Okay. And if you want to shoot it in 240 frames per second, then the video output will be 1080p. Hmm. So I prefer is 480 frames per second. Okay. But Somehow I shoot it in 720p, but उसके लिए काफी ज्यादा lights लगते हैं. You know, slow mos में बहुत ज्यादा lights लगते हैं obviously, if you want हाँ. to shoot. I think if you want to shoot in 1080p but still get, you know, the crispy slow-mo shots, there is a plugin for After Effects called Twixtor. So it is a paid plugin. You will have to pay for that. But still, you can put your regular footage there, and वो plugin के डालने के अंदर it automatically generates the frame. And it is... I guess I have heard about this thing कि frames generate होते हैं automatically. हाँ. And then वो fit करके उतना frames per second का whatever you want you get it. Exactly. So Premiere के अंदर there is already a feature called frame interpolation में उसमें optical flow करके है. हाँ. If it does the same thing, but Twixtor does it Much better. It gives you much better quality basically. But even Twixtor is not perfect. I actually saw this tutorial of Premiere Pro का. हाँ. You said ना optical flow. मैंने ज़्यादा use नहीं किया उसको, but इतना मुझे अच्छा नहीं लगा. So I yeah, it takes up a time as well. It was a long render back करने like के लिए, हाँ. months ago. I tried it. What do you think कि cameras का future कहाँ जाए? Future में what do you think कि क्या innovations हो सकते हैं या हो रहे हैं? I have seen a couple of innovations right now. One. Yeah, क्या देखा है? A week ago, I read कि do you know this Google Gigapixel? No. They have made a camera and they shot a painting. The painting's name was the Last Pompeii. तो उस painting को उन्होंने click किया using that Google Gigapixel. And वो painting का ये speciality है कि हर एक कैरेक्टर देर आर लाइक 10 to 15 कैरेक्टर्स इन दैट पेंटिंग एंड हर कैरेक्टर के आईज में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस मोमेंट पे हाँ वो उनके आईज में दिख रहा है मतलब दैट स्मॉल पोर्शन में एंड लिटरली दैट गीगा पिक्सल कैमरा शॉट इट एंड उसके बाद अराउंड लाइक इतना जूम करने के बाद भी उसमें लाइक अभी के एरा में व्हेन वी जूम इन डीएसएलआर कैमरास के आउटपुट इमेजेस तो वो फट जाता है ऑब्वियसली तो उसमें ऐसा नहीं था व्हेन द शॉट दैट वाज शॉट विद दैट गूगल गीगा पिक्सल उसमें एकदम क्लियरली दिख रहा था उसके आईज में कि क्या डिस्ट्रक्शन का जो पेंट किया हुआ है एक्चुअली देयर आर मल्टीपल पीपल हैव ऑलरेडी डन दैट यूजिंग एग्जिस्टिंग कैमरास एग्जिस्टिंग मिररलेस कैमरास बट वो मे बी प्रोसेस करके प्रोसेस करके नहीं दे या एक्सपेरिमेंट करके इट इज कॉल्ड सेंसर शिफ्ट okay you place the camera in one spot and then the sensor shifts side by side ऐसे करके हम usually एक ही फोटो निकालते हैं ना this one takes 9 photos and they stitch it I think this technology is old but you are hearing right now so have you ever used the tilt shift lens I haven't used it so do you plan to buy it something no because it's like मुझे पता भी नहीं है वो exactly क्या I know कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ऑब्वियसली नाम में है शिफ्ट करके और फिर थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाता है ब्रो आई कांट एक्सप्लेन इट मैंने उसके फोटोज देखे हैं इट्स लाइक हाफ थोड़ा सा बोके हो जाता है एंड आई कांट एक्सप्लेन इट इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव ऑफ द शॉट हाँ आई थिंक आई विल बाय इट वन टाइम मैं ना उसको फिल्म बनाने के लिए यूज करूंगा oh that's I've seen it being used in the beginning shots of a film like an opener and it was like a dream scenario the guy is dead and he's in heaven and he's looking at something and that scene was shot on tilt shift that's it it's like I guess वो bokeh भी create करता है काफी हद तक and it's like it is different yes so if you want to check out an example of the tilt shift lens then you should visit our website and we will have an example there yes and our website is phototalesmag.com. Speaking of tilt shift, you know how you are interested in wildlife photography? Yes. Have you ever seen the lenses that they use for that? Yep. So there is a guy, uska YouTube channel hai, and he shoots wildlife photographs. Okay. And he literally makes a bunker type temporary tent
कैमोफ्लाज वाला ऐसा, एंड उसका बड़ा सा लेंस है, उस पे भी कैमोफ्लाज का स्किन है, हाँ यू नो जो हम पबजी में करते गिली सूट टाइप, हाँ हाँ, पता जिसमें है घास पता है फूस पता में है. दिखे नहीं हम, उसी टाइप का. तो आई एग्जैक्टली डोंट नो कि वो कौन सा लेंस है एंड क्या रेंज है उसका, बट आई नो कि इट्स वेरी ह्यूज लेंस. द फन फैक्ट इज कि यूजुअली हम कैमरा बॉडी को ट्राइपॉड पे लगाते हैं, हाँ, बट उस लेंस में हम लेंस को ट्राइपॉड पे लगाते हैं, कैमरा बॉडी हवे में हवा रहता में है. रहता है क्योंकि लेंस इज दैट यस. that heavy. Oh, by the way, Sony just released a new lens for their mirrorless cameras. उन लोग ने आई थिंक एक 600 और एक 800 मिलीमीटर डाला, दोनों प्राइम्स. ओके, Okay. 600 prime, Primes. 600 prime and 800 prime. Okay, can you guess the price? Maybe 5,000 or 10K dollars maybe. I think the 600 millimeter one is $12,000. 12,000. Okay, so I guess maybe $12,000 only. now I think I guess it's beyond. Beyond our reach. 12,000 matlab 9 lakh rupees for a lens. To put उतना that into एक perspective. मिनट उतना वसूल भी होता है क्या? Of course, I mean, अगर उन लोग खरीदेंगे तो वैसा तो होगा ही ना. And you don't actually have to buy it all the time. You can sometimes even rent it. Okay, that's more That's protected. more thing. But still, to put that into perspective, Canon, Sony's A9, the wildlife photography camera or the sports camera that is made, which is very similar to 1DX, it is less than half the price of the lens. You know, there is this thing, Luminar AI. Yeah, It I've has heard about launched it. recently. Yeah, And उसमें एक ऐसा फीचर है कि एक क्लिक पे you can change your sky. yeah. And यही चीज कम से कम मिनिमम 5 से 6 मिनट लगता है फोटोशॉप में करने को. एंड यू डू इट इन अ सेकेंड्स, सिर्फ एक क्लिक में यू डू इट. दिस इज वेयर इट इज गोइंग. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. I know. इट्स ऑल्सो एक्साइटिंग कि इट्स ईजी टू यूज, कि एक क्लिक में यू कैन चेंज इट. Yeah, but I think that is going to, change some of my thoughts because the process of doing the editing, that's what's supposed to be exciting. Now it is like if the computer is doing the editing for me, what am I supposed to do? Yes, exactly. It's also like I saw this video. It's like a guy with a stylus. Mhm. He's just drawing a random drawing of a landscape. याद है हम बचपन में लैंडस्केप बनाते थे, घर बनाते हाँ थे, बीच में से हाँ, नदी पता जा है. रही है, पीछे माउंटेन्स है. He literally drew that simple drawing and artificial intelligence ने अलग अलग images को gather किया and एक new image बनाया. Yeah, what about? I think there is like a web app for that as well. I don't know that, but just imagine just randomly drawing something and you get, it's like shakalaka boom boom. It's that same thing actually. Similar है कि you draw that and you get it. Yeah, exactly. But just imagine कि Seems so unreal, right? बट वो जो पोस्ट प्रोसेसिंग का मजा रहता था, एज यू सेड कि हाँ. इतना टाइम इन्वेस्ट करके उसको एग्जैक्टली एडिट करना, एंड वो सब डेटा स्टोर्ड रहता था कि हम कभी भी उसको चेंज कर सकते थे. बट नाउ वेयर इट्स गोइंग, इट्स लाइक इट्स वेरी वेरी फार. Yeah, I think AI could also be, termed as something good because recently Sony ने उनके autofocus में improvement लाया है. Using AI, they have now started recognizing animals as well. And they used to use AI to recognize eyes. I think 3 या 4 साल पहले आया आई फोकस, आई थिंक सो. पहले उनका फेस डिटेक्ट आया and then came eye detect. And now they are doing the exact same thing for animals. That's literally crazy. That is going to change everybody's game. हम लोग ने इतने innovations के बारे में बात किया, हम लोग ने कैमरास के बारे में बात किया, but there something we have to tell ourselves is that there is no perfect camera. Even the best of the best camera will have some minus points. Yes. And us, the consumers, we have to choose our cameras depending upon what we want to do. You agree? Yes, I do. I still love clicking photos with my OnePlus 3T. I don't know why. I don't know. Still, see, I have the latest OnePlus 8T and I think उसका camera best है. Flex. But still, I still love clicking photos with OnePlus 3T and I still have. Yeah, that is very weird because I hate mobile cameras. I think we should wrap up this now and we can talk about how to choose your perfect camera in the next episode. Yes, definitely. Thank you guys for joining in, and this has been a very wonderful episode today. So I, Vinayak, and Anirudh, are gonna come back again in the next episode and discuss a lot of stuff about cameras. Yes. So stay tuned, stay hydrated.
Bye. Bye.